Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim. Welcome to another episode of Big Podcast. Today we welcome you from a city that's very close to my heart. Is home to some of the best people in the world, in Pakistan too, and is very famous for its delicacies as well. And we'll come to that too. But you've guessed it right. It's Karachi. And today we're going to be talking about the A-level students, their apprehensions, their subject selection, their university options that emerge once they graduate with their A-level and they progress on to a university later. And for this discussion, I'm privileged to be in the presence of someone who is very beloved by all of you, a champion in the field of business education for A-level, Mr. Asad Kothari. Asad, assalamu alaikum. Walaikum assalam, Amar. Right, it's a really good it's a really good initiative and a good start to the discussion. Yeah. Thank you very much, Asad. And thank you for taking time out for us as well. And I know I can understand this would be the time where the A-level students would be sitting their exams and you would be running a lot of mock sessions and all. Yeah, You'll be getting a lot of calls as well these days, right? Yeah. So how does that work? Do you ever get No, bothered by I these really calls? look forward to such experiences, and I really feel like this adds value to my own portfolio as well, probably. And so that's why I guess it's good to go about this initiative. And this is high time for teachers. It's really high time for teachers, and every student is expecting their teacher to be there for them, and I want to be there for them definitely. Yeah, but I like it. Yeah, and thank you very much for inviting. The pleasure is all ours. I mean, that's one of the things that we do at Beacon House. We want to ensure that we are at the bleeding edge of change, as we've been discussing. So this is also our way of giving back to the community. We want to conduct communication. We want to conduct conversations that not only add value to the profile of the organization, but also helps out the students too. So, but before we get into very detailed A-level oriented questions, let's just know a bit more about you. So kaisa raha? I mean, you're from Karachi, right? Yeah, brought up in Karachi. Brought up in Karachi. So how was that like? Like, matlab, how do you see the Karachi of those days and the Karachi of now? जो बात है Karachi. I was talking about Karachi before this camera was open, but Karachi अच्छा है, but Karachi को छोड़ दिया यार. That's what I not like about it. The sense of security is missing. Clearly, the hustle bustle is too much. It's a good city to be in. It's a commercial city. I feel like this. Probably the most commercial city in Pakistan. Definitely, yeah. And so it's clearly overpopulated too. Yeah, but it's a place to make good money if you're smart enough, I guess. This place is for the smarts. No, I'm sure. It's not. I like Islamabad more, but still, yeah. नहीं, for sure. But ये कि Karachi में भी, I mean, the people who don't live here, I think they also have a certain affinity for the city. And yeah, you're right. I mean, business wise, it's great, and उसके अलावा भी there are numerous reasons to love Karachi, and for sure. So your O level is also from here. A level. हाँ, मैंने जो है वो O levels किया 2010. I did my O levels in 2010. Then A levels in 2011. Right. Yeah, I did from Army Public School. Right. And privately, I did my A levels, and then went on to do my certified chartered accountancy, then my certified management accountancy. Acha. It's all been in Karachi, yeah. It's all okay. Right. So and then there's this very instance of हम discuss भी कह रहे थे कि then once you were done with your honors, तो फिर उसके बाद you went on to joining one of the GSK, right, GlaxoSmithKline. So फिर what happened over there? That was back in 2013. Right. Okay. Yeah, I joined GSK because that's what everyone does, I guess, because that's what the mainstream concept is. You just get educated, you get a job, you get a part of, that was a multinational too, the top pharmas around the world. Yeah, I got promotions initially. I joined in as a trainee and then went on to be an officer, then executive, accounts executive. I was in the finance department. Okay. Yeah, worked there for 2.5 years. It was a good company, all the perks one can think of, like, at that stage, obviously. Yeah. At my age at that time, but yeah, that was a good experience, and I was enjoying it. I was living it. I was enjoying the perks of being in a multinational. But then I realized, no, that's not my thing, man. I'm not a 9 to 5. Yeah, that was close, man. So, but yeah, I just had to, and I decided to finally
finally quit. One of my mentors, Farhan Harun, I remember, was the guy who just pushed me and like, bro, what the hell are you doing? Like that. He just scattered me so hardly. Yeah, so yeah, that's, I guess, a very good decision. I was enjoying GSK. Certainly. Yeah, but that was a good switch, and I feel like it's worth it. Yeah. तो मतलब what about the rest of the people around you know इस तरह कोई डिसीजन बंदा ले रहा होता है तो फैमिली वाले ही सबसे पहले कहते हैं यार मतलब सोच लो क्या कर रहे हो अच्छी बड़ी जॉब छोड़ रहे हो इतने पर्क्स हैं इतना कुछ तुम अर्न कर रहे हो रेपुटेशन है माशरे में सब कुछ हाउ डिड यू डिसाइड कि यार जस्ट पुल्ड आउट ए थ्री इडियट्स वाला सारा स्क्रिप्ट कैसे किया Yeah, 3 Idiots the right example. So बिल्कुल ऐसा ही है और अब्बा जो है मेरे तो अगेंस्ट थे इससे अब्बा नहीं मानेंगे अब्बा नहीं मानेंगे वाला ही था सीन अब्बा वाज लाइक क्या कर रहा है पागल हो गया are you going nuts or what yeah the first time I listened my father to be harsh was this time yeah he had never scolded me or something but this was a time when he just like bro what are you doing because that's tough now so khair I was like no I know what I'm doing let me Right. be Okay. and the amount that I was earning in city school we're talking I started from city school after yeah GSK. you were mentioning The salary that city school was giving me like was 1/3 what I was getting in GSK. सही है Accepting that salary and अच्छा you told Abba Yeah. that you will be making this switch after securing a job at City या ये पहले ना पहले मैंने resign दे पहले resign कोई जॉब नहीं कुछ नहीं resign पहले not coming from tomorrow देखी जाएगी कश्तियाँ जला के जाना होता है यार फिर ही जाते हैं हाँ सही है तो अच्छा so then you started working at the city school और फिर उसके बाद तो how was that experience यानी कभी मतलब ये हुआ कि यार अच्छा मैंने सारा छोड़ तो दिया but now moved on to you know classroom teaching तो वो कैसा था experience यार बहुत अच्छा था it was a boys campus I really liked it जाहिर है boys campus के अपने scenes हैं उन बच्चों के अपने हाँ उन बच्चों के अपने कहानियाँ हैं जो बात है तो खैर उसमें I really liked it अच्छा था city school भी but मैंने वहाँ पे बहुत टफनेस सीखी रफनेस सीखी मुझे लगता है हर तरह के जोक सुन के आप पेशेंटली कैसे उसको रिवर्ट बैक करते हैं वो सीखा मैंने वहाँ पे एक टीचर को बहुत ज़्यादा जो विट्टी होना पड़ता है अजीब डिफरेंट था बट इट्स अ गुड क्राउड आई स्टिल मीट वन ऑफ स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे तो अच्छे ही होते हैं लेकिन बहुत डिफरेंट तरह के बच्चे हैं सिटी सॉरी टू बी आई थिंक ए लेवल में शायद होता है इससे टॉकिंग अबाउट लेवल स्कूल ओके दैट्स ना वो बट यू नो आई थिंक ए लेवल में शायद इस तरह से होता है बिकॉज इट्स दैट एज वेयर यू नो स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू मल्टीपल ऑल सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस and there are so many apprehensions and as well at you know when you're in your A level अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा नहीं मिलेगा अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे plus there's a lot of peer pressure as well at that time so many things that happen in the background के you know students act a certain way मैं तो सिर्फ अभी अपना A level का टाइम याद कर रहा हूँ कि how I used to be मेरे मेहरबानी मेरे अम्मी अब्बू की उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं but yeah so you know times have now changed. I mean, back when I used to be in A level and when we were in A level. So, how do you compare the students from that time, like almost a decade ago, 10, 15 years back, and how do you see them now? Like the questions they ask, the way they learn, the examples that they look for. बहुत बड़ा फर्क है यार. I think students have evolved. पहले बच्चों को टीचर चाहिए होता था, अब टीचर चाहिए नहीं. अब थोड़ा सा इनको ना मिक्स ऑफ अच्छा टीचर भी चाहिए फिर मेंटोर भी चाहिए फिर उनको एंटरटेनर भी चाहिए और फिर फैसिलिटेटर भी चाहिए काउंसलर भी चाहिए उनको वो एक ऑल इन वन पैकेज चाहता है वो टीचिंग से टीचर चाहता ही नहीं बेसिकली पहले वो ये था कि चले अब किताब पढ़ें और फिर किताब में ये सब्जेक्ट ये चैप्टर वाज दैट्स व्हाट द माइंडसेट वाज पीपल वर स्टिल विलिंग टू लर्न ऑब्वियसली अभी भी द वे हैज चेंज्ड द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स हैज चेंज्ड the AI, the YouTube, the whatever you talk about, the students are like, oh, let me just chat GPT first. Like that's what the concept has been now. Previously, भाई teacher ने कुछ बोल दिया तो यही सब कुछ है. अब वो teacher की बात को भी question करता है सामने से. They have become much faster, much sharper, I guess, and that's a good part. In fact, change तो I think it's the only constant. And पहले बच्चे information और उसकी ना होने की वजह से थोड़े slow थे, but respectful ज़्यादा थे. अब जो बात है थोड़ा सा रिस्पेक्टफुलनेस में कम है लेकिन फिर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है शार्पनेस ज़्यादा है सो दे हैव इवॉल्व्ड बट अपने अपने चैलेंजेस से दोनों टाइम के आई गेस आई थिंक यू राइट मतलब इन द सेंस के एक तो यस ऑफ कोर्स
टीचर जो पहले बात करता था उसको ऑफ कोर्स they would accept it as is. Now ChatGPT is also a teacher. Also, Oh, all yes. GPTs are Yeah. teachers now, right? जो बात है. और वो मेरा ख्याल है कि अपने बच्चे की पेस पे भी कई दफ़ा चल, नॉट टू डिस्क्रेडिट एनी टीचर, आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब द मॉडल्स आर सो वेल डिवाइज्ड नाउ that they can teach you at your own pace as well. Everything, yes, But still, do you think if there can ever be a time where one can completely rely on an AI model and Completely reliance is a bit harsh, I guess. No, I don't think so. No, I don't think so, because human intervention और human interaction तो चाहिए, चाहे आप कितनी भी टेक्नोलॉजी लेकर आए. I feel like this as in this area, in this education field, I guess human interaction के बगैर तो बच्चा अधूरा है यार, चाहे वो जितना दिन YouTube देख ले और AI देख ले. Yes, it's really good if you know how to use it, if you know how to make good productive use of it. That's like the thing, yes. yeah. But can it replace the physical human element? No, I don't feel like. In the education sector, no, I don't think so. हाँ, मतलब I'd like to think the same honestly, because वही जैसे आपने बात करी, you have structured it so well the answer कि the teachers looking for a the students looking for a mentor, a teacher, a friend, a counselor, and you just cannot get all of these things with the GPT model. Yeah, definitely. With any AI model for that matter. अच्छा, so when you started teaching business, so business में, I mean, sometimes some students think that it's a perception कि business is an easy subject या थोड़ा सा boring subject. बिजनेस ले लो ना. कुछ नहीं हो रहा, business कर. अच्छा चलो accounting रखी है यार, साथ उसके economics ले, business भी रख लो यार. So do you agree with that perception? या मतलब business easy है is the हाँ, पता नहीं, मैं अपने subject को is it actually easy? मतलब मुझे तो इतना easy नहीं याद है. Naturally biased towards my subject. ये तो सच है. Easy तो नहीं है यार. I don't think so it's easy. जो कहते हैं ना easy, उसको paper 3 करवाए लेवल का बुला के. बिल्कुल ऐसे ही है यार. लेकिन नहीं है. I think business subject की अगर मैं बात करूँ तो it's a good subject. Yeah, it's easier than a lot of subjects. It's जैसे मैथ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बिजनेस इज डेफिनेटली ईजियर देन मैथ इन माय डेफिनेशन. एंड अकाउंट इकोनॉमिक्स से अगर कंपेयर करें तो या बिजनेस इज ईजियर अगेन, बट अगेन डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट यार. अकाउंटिंग करने वालों को किसी का शौक होता है तो अकाउंटिंग भी उसके लिए ईजी होता है, और लॉ पढ़ने वाला होता है तो फिर लॉ भी उसके लिए ईजी होता है. और मैथ पढ़ने वाले तो फर्दर मैथ के भी स्टूडेंट्स मेरे पढ़ते हैं बच्चे, तो फर्दर मैथ भी उनके लिए ईजी होता है. वो फिर डेफिनेशन वेरी करती है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. Business is a good subject. It's easier than a lot of subjects if you have interest in it, yes. But if you don't have interest in it, then it's very tough for you. That's for sure. Yeah. Because I mean, of course, for a science student, business. I mean, I'm not saying it is, but it could be a nightmare. It could be one of the reasons that they didn't go for it. And sometimes I think आप सही कह रहे हो. Sometimes कुछ लोगों का aptitude ही होता है business वाला. They're so certain. They're so hell bent on studying business, being a business person, joining corporate sector. कि वो और कुछ लोग होते हैं उनका वो होता ही नहीं है वो scene. They just want to work in labs. They just probably want to work in field या engineering वाला background. Not saying necessarily this is for everyone, but yeah. So और बाकी सही वाली बात है कि जिसको है उसे ए लेवल का पेपर 3 करवाएं. तो तुम बताओ भाई कितना इजी है बिजनेस. मगर what do you think is that, I mean, in your understanding and your very vast experience, what do you think is that one thing that A level students generally get wrong? Sorry, I didn't get the question. Like, what do you think is that one thing that the A level students generally get wrong, or you think, yeah, this is not the way to do, you should have done something else? Yeah, कई दफ़ा होता है ओपिनियन का यार कि आजकल के बच्चे ए लेवल के ये ठीक नहीं कर रहे यार, इनको इस तरह नहीं करना. अच्छा, ए लेवल के बच्चे themselves वो ठीक नहीं कर रहे. हाँ, या when they're studying or even in their lives. आजकल के बच्चों को लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं कर रहे. पता नहीं, काफ़ी सारे उनको different perspective they have about themselves. यार हम यहाँ ये खा रहे हैं तो सही नहीं खा रहे, ये सो रहे हैं तो सही नहीं सो रहे, ये सवाल कर रहे हैं तो सवाल सही नहीं कर रहे. कि काफ़ी सारे बच्चे तो सेल्फ डाउट में आ गए हैं. ये बात भी है. कुछ हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, अभी तक बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर नॉट डूइंग राइट. एंड इफ आई वुड एडवाइज देम टू डू इट इज टू गेट देम ऑर्गेनाइज्ड, इज टू गेट देम ऑर्गेनाइज्ड. और मेरा ख्याल है कि वो दैट इज पिवटल फॉर सक्सेस. डेफिनेटली यस यार. ऑर्गेनाइज होना तो फिर सकीन है यार.
Yeah. If you know how to manage time and how to just set the right thing, right time for right thing is the game. Yeah. अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब हम ओ लेवल में होते थे we used to think back when we were in O level we used to think कि O level में अगर चलो सारा टाइम नहीं पढ़ा but we studied the last 3 months, many of us pulled it off. Do you think it's possible in A level? सारा A level नहीं पढ़ा, last 3 months में पढ़ा we can pull हाँ it यार, off. अब 3 महीने में हो तो सब कुछ सकता है. हमारे बच्चे 1 महीने में भी करते हैं, करने वाले तो हो नहीं सकता है. नहीं पास नहीं होना, A लेना. नहीं है, 3 महीने में नहीं हो सकता. सॉरी 3 महीने में A नहीं हो सकता. यार नहीं हो सकता है. मतलब हो तो सकता है बट इट मेक्स नो सेंस यार. कम ऑन, हो तो सकता है. आई वोंट से नो नहीं हो सकता. हो सकता है बट obviously it's not right. Why would you want to do something that you should be doing in 1 year in 3 months? That's what I would always ask. It's not just about you get a grade, no? It's about the entire year of exposure, the experience, the classroom, the sport, the speeches, the debates. Yeah. It's the entire 1 year. Yeah. And why would you just want to do it in 3 months? That's like a question mark from my side. I would say this, yeah. मैं कुछ लोग होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स कहते हैं अच्छा यार ए लेवल के तो ए लेवल में तो मज़े करेंगे, ये करेंगे, वो पढ़ेंगे पर एंड में 3 महीने पढ़ लेंगे. ये है, हाँ है, लेकिन नहीं यार. आई वुड से कि पूरा साल आपको, if you have invested your time, money and energy into it, then why not just take good use of it ना यार. Yeah, and it makes sense. I mean, I think it's the whole experience that you sign up for, and it's I mean the whole 2-year journey of A level या FSC या जो भी आप कह रहे हैं, मतलब it's designed a certain way, definitely. and there are some goals that you are expected to achieve, and for that achievement you have to go through a 2-year journey, you know, a very focused journey of academic strength, of sports strength, of your overall holistic development. Yeah, definitely yes. Yeah. So okay. So now bringing your attention to the last bit of our podcast. So once somebody is done with their business, with their business A level and with their A level in general, what have you noticed? What are the you know market trends, the job trends? क्या करना चाहते हैं? किन companies में जाना चाहते हैं? What do you think are the career options that emerge once somebody graduates with A level? Career options for business students I would say कि बहुत सारे निकलते हैं. ज़ाहिर है एक आपके पास होता है कि आप academic route होल्ड करते हैं, जिसमें आप अपने BBA और मे बी एनालिटिक्स एंड entrepreneurship, आप एक academic साइड आप जाते हैं, मे बी where you go for a university, and the other side is I guess जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे आता है, जिसमें वो ACCA, CIMA, CA, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, सो आई गेस वहाँ पे एक राउट निकलता है. A lot of kids now I think have changed a lot over time. उनको वो तो कॉलेज खत्म होने का वेट नहीं कर रहे किसी करियर उसके लिए. वो ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द कॉलेज, ड्यूरिंग दैट लाइफ वो अपने बिजनेसेस स्टार्टअप कर रहे हैं. तो वो बिजनेसेस स्टार्टअप करना itself is I think a big career route that I would always want my students to take. But I've still seen कि ज़्यादा बच्चे फिर भी they go for undergraduate education. They prefer that. Definitely they must. And पढ़ाई तो in fact not just undergrad, and they should, yes definitely, but मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट उस पर अंडरग्रेड में भी जा रहे हो तो आप एटलीस्ट टेक अ गैप ईयर इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई यू वांट टू डू इट. राइट. बट इज इट अ क्वेश्चन कि अंडरग्रेड जाना है? नहीं तो डेफिनेटली जाना है. मैं तो हमेशा कहूँगा कि डेफिनेटली जाना है, नॉट जस्ट अंडरग्रेड. यू हैव टू पोस्ट ग्रेड एंड गो फॉर. पढ़ाई तो सारी जिंदगी आप, मैं तो पढ़ाई खत्म नहीं होती. आई स्टिल फाइंड माय वेज टू स्टडी एंड गो फॉर सम कोर्सेज एंड आई वांट टू स्टॉप अभी तक. डेफिनेटली पढ़ाई ख़त्म नहीं होती बंदे की, ये तो हम एक्सपीरियंस से कह सकते हैं. आप इतने साल काम करके भी बंदे का. बट व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट आर सम ऑफ द डिग्री ऑप्शंस दैट इमर्ज आफ्टर दिस? अकाउंटिंग, किसी का अगर कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग बिजनेस या इकोनॉमिक्स वाला है या इस तरह से है, तो वो किस उसके लिए क्या डिग्री ऑप्शंस हैं जनरली? डिग्री ऑप्शन जो फर्स्ट निकलता है, जो सबसे ज़्यादा हम मेन स्ट्रीम कहते हैं या मे बी कहते हैं कि यार ये तो सब करने वाला इज़ BBA. But I still feel like BBA is worth it because BBA बहुत सारे लोग भी कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है. I think if you want to do it. So BBA का एक crowd निकलता है. Second, I think I'm very limited with my knowledge of all the degrees. I could not just list it down, obviously. But number one is BBA. I think the second that goes on is accountancy and finance. Yeah. And third that goes on is like the business analytics. That's one of the top growing fields. It's a new thing coming out. And CA, ACCA, I guess if you go for a professional qualification. Right. And और भी बहुत सारे economics है, LUMS जैसे offer करता है. economics के बहुत सारे courses होते हैं. और अब तो I think you must have better knowledge about it. लेकिन जो
प्री-ग्रेड्स ऑफर कर रहे हैं उसमें भी इटसेल्फ बहुत सारी नीशेस आ चुकी हैं। या जैसे सिर्फ आप AI के अंदर स्पेशलाइज्ड कुछ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, इवन बैचलर की डिग्रीज के साथ आप स्पेशलाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इसके अलावा तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दीज मेन स्ट्रीम डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन, आई एम कॉलिंग इट मेन स्ट्रीम बट दे आर स्टिल वर्थ इट, ऑब्वियसली आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड मेन स्ट्रीम। बट इसके अलावा भी आई थिंक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल अलग तरह की डिग्रीज वो अराउंड द वर्ल्ड कर रहे हैं। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर अब बच्चे सीख रहे हैं कि वो किस तरह से टूर हॉलीडेज और टूर पैकेजेस काम करते हैं। शेफ से रिलेटेड कितने ऑप्शंस हैं आपके, खाने कैसे पकाने और कलरी आर्ट क्या होता है, तो उससे रिलेटेड वो डिग्रीज हैं वो बहुत बिल्कुल परसू कर रहे हैं। दैट्स रियली डिफरेंट। एक मेरी स्टूडेंट थी, वो स्टिचिंग के डिफरेंट तरह के, वो पता नहीं डिग्री कहाँ से निकाल के लेकर आई थी कि ये स्टिचिंग सिखाते हैं उसमें 4 साल तक। मतलब व्हाट द हेल, ओह माय गॉड। काफी ऑप्शंस तो आई थिंक लिमिटेड, हाँ यार ऑप्शंस तो लिमिटेड है ही नहीं, मतलब ऑप्शंस तो इतने सारे हैं बस, but one should know why they are doing it. That's what the point मेरा है। ख्याल है it has to be something that comes from the inside कि मैंने ये मैं करना चाहता हूँ और फिर मैं उसमें वो जो है pursue करूँ। And what about the students? Have you seen any students who generally show a lot of inclination towards pursuing degrees outside Pakistan? Outside Pakistan? Outside Pakistan तो यार मैं तो कहता हूँ बच्चों को जाने ही नहीं चाहिए। जाने नहीं चाहिए क्यों? यार नहीं जाना चाहिए। आप you're born here, come on यार, just serve the country at least यार। मतलब मैं तो कहता हूँ उन बच्चों को क्लास में खड़े होकर बोलता हूँ कि यार अगर आप अपने मुल्क के नहीं हो तो आप किसके हो गए यार। मतलब आप एज ए सेकंड सिटीजन आप कहीं भी चले जाओ, आप पैसे कमाओ, आप उड़ाओ, ट्रैवल करो, बट स्टे हेयर। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, स्टे हेयर। मतलब जहाँ ठीक है, इफ योर फैमिली गोज आउटसाइड, इफ यू वांट टू गो विद फैमिली, दैट्स अदर थिंग, but for you and making money and career, oh I'll go abroad and have a better life, that's not no life. I don't feel like this. Maybe I would have a different opinion than a lot of people out there. Of course, we all have our own opinions. Yeah, but I would always say no, man. There are options here. If you're smart enough, you can make good money here and you can make good fortune there. Yeah. Or maybe just, but no. If you go abroad, then options तो बहुत है. Definitely universities बहुत सारे options हैं. जो बहुत सारे business schools हैं, बहुत सारे डेफिनेटली ऑप्शंस तो फिर बहुत सारे हैं। मेरी तो खैर 3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ पे नॉलेज है नहीं। आई हैव नेवर बीन इनटू दिस साइड रियली। And this is one of the things that we also say to students जब हम उनके साथ सेशंस वगैरह कर रहे होते हैं, because there are students, as we were discussing as well, who want to travel outside Pakistan for an undergraduate degree, but they don't want to spend as much money because it is a very costly experience. So that's where generally we tell them about Beacon House International College, and we say, okay, we have international degree programs. You can still get your degree from the university, UK-based university. Yeah, stay here. Study their curriculum with flying faculty as well. Way better. Oh, absolutely. You could save up to about like 90% in terms of the tuition fee. जो आप यूनिवर्सिटी को वहाँ पे करते हैं, you can save that money and you can still get the degree. So I mean that's also an option for today's students. Just time pe the concept of transnational education wasn't really it wasn't in the market as much जब हमें level में होते थे. But yeah, thank you very much. It's been a remarkable conversation with you, and I mean I got to know so much about what's happening with A-level students and how they're thinking and what their varying needs are. And very glad that I'm very glad you invited, and I'm more than happy to learn something new from you. Maybe it's gonna be a two-way street for the both of us, honestly. And thank you very much for joining us for this conversation. I hope you enjoyed it. We spoke about A-level business, and some of the university options that are available to Pakistani students who are getting done with their A-level or FSC or intermediate education. And if you would like to get more information on Beacon House International College, please do visit our website www.bec.edu.pk. As we've discussed, we're partners with some of the highest ranked UK institutions, including University of Essex, University of Kent, Liverpool John Moores University, University of London, and with Pearson as well, and we're offering some very high ranked degree programs with them. So if you're interested in any of those programs, please do visit us or also contact our team, and we'll provide you every bit of information that we can. And so see you very soon with another episode of Big Podcast.